हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल चॉय फूड एंड ट्रैवलर। आज मैं आपको ले जाऊंगा जंगल सफारी पे। जंगल सफारी इज़ लोकेटेड इन केवडिया नियर टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात, इंडिया। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू विजिट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बट दिस वीडियो इज़ कमिंग इन सेकेंड पार्ट। सो अभी हम लंच के लिए यहाँ पर होल्ड किया हुआ है फूड कॉर्नर। नॉर्मली यू नीड परमिट टू ब्रिंग योर कार हियर। It's not allowed for everyone. और यहाँ पर सभी तरह के फूड अवेलेबल है, फास्ट फूड, पंजाबी फूड, एवरीथिंग। और सामने ही नर्मदा ब्रिज, नर्मदा डैम। और ये ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज। और हम लंच लेके यहाँ से जाएंगे सफारी पार्क। सफारी पार्क भी काफ़ी नज़दीक है, ऑनलाइन ही बुकिंग करवाया है सब कुछ। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आते हैं तो नॉर्मली 3 to 4 days प्लान करके आए तो काफ़ी सारा घूमने जैसी जगह है, तो आप विज़िट कर सकते हो। हम अभी 2 दिन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सफारी पार्क। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी थोड़ा हमने कैंसिल किया है, डिले किया है प्लान। वो जाएंगे हम 4 o'clock, क्योंकि वहाँ पर लेज़र शो भी होता है, तो वो देखते हुए। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक रिक्शा भी है जो आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, पॉल्यूशन ना हो उसकी वजह से सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही काफ़ी यहाँ पर यूज़ होते हैं। और ये देखो, ये गार्डन है बच्चों को प्ले करने के लिए। पीछे अच्छा माउंटेन रेंज, इट्स रियली गिव अ यूनिक व्यू। और यहाँ पर डायनो ट्रायल, शायद डायनासोर पार्क जैसा भी कुछ है। सो अभी हम आ गए जंगल सफारी पे। ये देखो गेट, और वहाँ पर टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहा है। और सामने ही पेट्स जोन है। सो अभी हम हैं जंगल सफारी के एंट्रेंस पे। मिस्री अभी हम आए चिड़ियाघर में। जो मिस्री कितना अच्छी चीज है। Wow.
वहाँ पर फ्लेमिंगो। શું કરે? सो ये था चिड़ियाघर, बर्ड्स हाउस। हाँ mau chicken. Salah. Sulamos. ये बैठी है और गई करो भाई हम तो देखी थी 21 की बता दो 21 भले ही 12 आम पहला मैं आवा दो पहला किसी करिए आयो मोबाइल तो फाइल ले वो पास आएगा मैं मारा फोटो पाड़ा था ना अरे एमा શું કરો મને સેલ્ફી લેવો ઉપર બડે ઉપર એ બધા પર જાવ ચાલ ના ફોટો પાડ નામ કે મસ્ત ખાટા ટોસલા So that is all from our visit to जंगल सफारी। और अभी हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने। वहाँ पर आप देख सकते हो।